Good morning, class 10th. So students, today we are starting with the topic ethanoic acid, and in today's video lecture we are going to discuss about introduction of ethanoic acid, its chemical properties, its physical properties, and we will also discuss uses of ethanoic acid. So students, let's start. So students, ethanoic acid, which is also known as acetic acid or vinegar. Students, it is the second member of the homologous series of carboxylic acids जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, and is represented as CH3COOH. Students, ethanoic acid is present in fruit uses which have become sour. In the combined state, it is present in biological fluids and many plant extracts as salt or ester. Students, vinegar इसको किस फॉर्म में बोलते हैं? A dilute aqueous solution of ethanoic acid is known as vinegar. Dilute aqueous solution. Students, actually vinegar contains about 5 to 8% ethanoic acid and is used for preserving foods like pickles, sauce, etc. Students, now manufacture of ethanoic acid. Manufacture of ethanoic acid. So कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं हम इथेनोइक एसिड को? Students, ethanoic acid can be manufactured from ethanol by fermentation or methanol. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. So students, पहले हम पढ़ते हैं from ethyl alcohol और ethanol. बच्चे हमने ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में. सो स्टूडेंट्स, this method is by the fermentation of ethyl alcohol. Okay students, this method involves the manufacture of a dilute solution of ethanoic acid by the fermentation of dilute ethanol about 10 to 15% in the presence of air by using aerobic bacteria. The dilute ethanoic acid is known as vinegar, as I told you before. So students, this is ethanol. हम इसकी फर्मेंटेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट इथेनोइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर बिकॉज इट इज डाइल्यूटेड. सो इट इज कॉल्ड एज विनेगर प्लस वाटर. So students, we can manufacture ethanoic acid by the fermentation of ethyl alcohol. And कैसे होगा ये? This method involves the manufacture of dilute solution of ethanoic acid by the fermentation of dilute ethanol solution, and we get dilute ethanoic acid, which is also called as vinegar. And second one is from मिथेनॉल. ओके स्टूडेंट्स, मिथेनॉल से हम कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स, इट इज अ कमर्शियल मेथड. इथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन प्योर स्टेट बाय कार्बोनाइलेशन ऑफ मिथेनॉल, दैट इज रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से? मिथेनॉल इज CH3OH. इट इज मिथेनॉल in presence of carbon monoxide, in the presence of iodine rhodium as a catalyst, and we get ethanoic acid. So students, what we did introduction of ethanoic acid and manufacture of ethanoic acid. And in manufacture of ethanoic acid we have studied
two methods. One by the fermentation of ethyl alcohol and other is from methanol. And methanol is a commercial method in which ethanoic acid is produced in pure state by methanol, by carbonylation of methanol, that is reaction of methanol with carbon monoxide in presence of iodine rhodium catalyst, and we get ethanoic acid. Okay students, now move on to the next topic, that is physical properties of ethanoic acid. So students, physical properties of ethanoic acid. So students, properties of ethanoic acid, physical properties. Firstly, we are going to discuss physical properties of ethanoic acid. First one is physical state and smell. Students, at ordinary temperature, it is a colorless and pungent smelling liquid and sour taste. Okay students, it is a colorless and having pungent smell like vinegar like smell. Okay students, strong smell होती है इसकी. Okay students, next one is melting and boiling points. Its melting point is 290 Kelvin, so it often freezes during winter and looks like glacier because its freezing point is 290 Kelvin, and in some books it is 289.6 Kelvin, and it gives crystals like those of ice. Okay students, and hence named as glacial ethanoic acid or glacial acetic acid. It boils at 391 Kelvin and its density at 273 Kelvin is 1.08, that is heavier than water. That is heavier than water. Next one is solubility. It is soluble in water, miscible with water due to the formation of hydrogen bonds with water molecules in all proportions. It dissolves in sulfur, iodine and many other organic compounds in all proportions. Okay students, 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar, which we have studied. Next one is properties of ethanoic acid. It dimerizes on dissolving in benzene. ये क्या हो जाता है, डिमराइजेज हो जाता है जब हम इसको क्या करते हैं, आयोडीन में डिसॉल्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, डिमराइजेज का क्या मतलब है? डिमराइजेज मीन्स कि जो है सेम मॉलिक्यूल्स, जो है 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं सेम कंपाउंड के. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिमराइजेज हो गया व्हेन डिसॉल्विंग इन बेंजीन. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. नाउ मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड. फर्स्ट इज esterification reaction. First is esterification reaction. So students, esterification reaction में क्या होता है, ethanoic acid on reaction with an alcohol in presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid as catalyst forms an ester. This reaction is called as ester, and the reaction is ethanoic acid on reaction with ethanol in presence of concentrated H2SO4 gives out ethyl ethonate. क्या बचे, ethyl ethonate. ethyl ethonate. Okay students, and water, and this reaction is known as esterification reaction because it forms an ester. This is known as ester. Okay students, next one is reaction with a base. Reaction with a base. So students, बेस के साथ इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट. बच्चे आपने 8 में भी एसिड बेस के बारे में पढ़ा होगा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. सो जब इथेनोइक एसिड जो है आपका
बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट and water, and sodium ethonate is a salt. So students, when ethanoic acid reacts with a base, that is sodium hydroxide, it gives a salt, and in this reaction sodium ethonate is a salt. Okay students. Now students, next is reaction with carbonates and hydrogen, reaction with carbonates and hydrogen carbonate. Students, ethanoic acid decomposes carbonates and bicarbonates producing salt, carbon dioxide and water. See the reaction. Ethanoic acid, this is a carbonate, Na2CO3, sodium carbonate, and we will get ethonate, this is a salt plus water plus carbon dioxide, and in case of सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, वी विल गेट अगेन अ इथोनेट प्लस वाटर प्लस carbon dioxide, and it is a salt. Students, as you all know, acid turns blue litmus to red and neutralizes alkalis, that is bases, to form salt and water. So it also decomposes carbonates and bicarbonates to liberate carbon dioxide. Okay students. So जो आपका bicarbonate test है, it is also used in identification test for presence of carboxylic group in a compound. Okay students. So these are some of the chemical properties of ethanoic acid mentioned in your book. बच्चे ऐसे देखा जाए तो इथेनोइक एसिड की अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज करनी हो तो बहुत सारी हैं बच्चे, बट हम वही करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है. ऐसे आपकी जो है रिएक्शन विद मेटल्स, अल्कोहल्स, आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के साथ रिडक्शन, बहुत सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऑक्सीडेशन, बहुत सारी हैं, बट हमने वही पढ़नी है जो आपके बुक में मेंशन है. सो फर्स्ट इज एस्टिफिकेशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद अ बेस, ये भी हमने पढ़ ली. एंड जो है आपकी लास्ट वन है reaction with a base, and last one is reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Okay students. So ये हमने पढ़ ली हैं. Okay students. So now पढ़ते हैं अब इसके uses of ethanoic acid. Okay students. uses पढ़ने से पहले बच्चे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो है ईस्टरिफिकेशन में हमारा ईस्टर बनता है. तो ये जो है ईस्टर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चे. ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सबस्टांसेस, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स, एंड सो आपका जो इथेनोइक एसिड है उसमें जो है उसकी फॉर्मेशन में क्या बनता है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर बनता है. सो दे आर फॉर्म बाय, ईस्टर्स आर फॉर्म बाय ईस्टरिफिकेशन बाय reaction between an acid and an alcohol in presence of concentrated H2SO4, we get an ester, ethyl ethonate. Okay students. And they are used in making artificial perfumes, also used in making flavors, used in cold drinks, ice creams. Okay students. So this is what an ester is. Okay students. Now uses पढ़ते हैं ethanoic acid के. Students, uses of ethanoic acid. Students, ethanoic acid is used in manufacture of dyes, perfumes and rayons. Next one is manufacture of rubber from latex and casein from milk. It is used for coagulation. Okay students. In form of salts in medicines and paints, in form of acetates of aluminium and chromium, is used as mordants in dyeing and waterproofing of fabrics. Okay students. It is also used in dilute form, is used as vinegar, and in the concentrated form as an solvent. इसकी जो dilute form है उसको हम vinegar में use करते हैं vinegar के तरीके से, और जो concentrated form है उसको हम as a solvent use करते हैं.
इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक ईस्टर्स एज परफ्यूम्स, अभी पढ़ा हमने ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में. फॉर मेकिंग वाइट लेड विच इज यूज्ड इन वाइट पेंट्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड. इन इट्स 5% सोल्यूशन इज बैक्टीरिसाइडल, डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया. इसका जो 5% अगर हम सोल्यूशन ले दैट बिकम्स बैक्टीरिसाइडल, destroys bacteria. It is used in the preparation of cellulose acetate, making photographic film. Okay students, and last one is it is used for preparation of 2,4-dichlorophenoxyethanoic acid which is used as herbicide. Okay students, so जो इसके मेन यूजेस हैं वो हैं आपके फर्स्ट 4. सो मस्ट फर्स्ट 4 पे आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा. इथेनोइक एसिड की इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, मैन्युफैक्चर पढ़ा इथेनोइक एसिड का, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. ओके स्टूडेंट्स, अब जो है डिफरेंस उसका जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. स्टूडेंट्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड का डिफरेंस पढ़ते हैं अब हम. ओके स्टूडेंट्स, देन जो है आपका ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एंड उसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स now we will discuss about some points of difference between ethanol and ethanoic acid. So students, firstly on the basis of physical properties. So ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell, but ethanoic acid is a colorless liquid having vinegar like smell, having pungent smell. Ethanol has a bitter burning taste, but ethanoic acid has a sour taste. Ethanol has a low boiling point of 78 degrees Celsius, but ethanoic acid has high boiling point of 110 degrees Celsius. It is 110 degrees Celsius. Students, these are some of the point of differences on the basis of physical properties. Now let's move on to the chemical properties. So here are some points of difference between ethanol and ethanoic acid on the basis of chemical properties. So students, first point of difference is ethanol does not react with NaOH, sodium hydroxide, that is with a base, but ethanoic acid reacts with a base forming sodium ethonate, forming salt and water. हमने अभी पढ़ा इसको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड में. इथेनॉल हैज़ नो एक्शन विद लिटमस सोल्यूशन, बट as ethanoic acid is an acid, so it turns blue litmus solution into red, because it is the property of an acid that it turns blue litmus solution into red. Last one is ethanol on oxidation gives ethanoic acid in presence of acidic KMnO4. The reaction is this. Students, but ethanoic acid does not get oxidized in presence of acidic KMnO4. Students, these are some of the point of differences on the basis of chemical properties of ethanol and ethanoic acid. So students, now हमारा जो टॉपिक था इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड यहाँ पे बाइंड अप होता है. इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस our new topic, that is soaps and detergents. That is our last topic of this chapter. Okay students, so this is all about today's video lecture. Thank you students, have a nice day.